क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत लॉजिकल है, and this is so much important for your upcoming JEE exam, and also it is one of my favorite topics. Okay, so let's get started. Okay, see, first of all, one thing, that the surface is what here, see, it is curve, and there are two different medium 1 and medium 2. See, ये medium 1 है, this is medium 2. Now here it is mu1 and this is mu2. What is mu1? We know, we already learned that mu is what? The absolute refractive index. So mu1 is what? The absolute refractive index of the medium where what? Ray of light is just incident, right? And mu2 is what? The absolute refractive index of that medium where light is reflected. ठीक? So we have a very special formula, and this is the most dominating formula in ray optics. Mu2 by V minus mu1 by U is equal to mu2 minus mu1 divided by R. I repeat, mu2 upon V minus mu1 upon U is equal to mu2 minus mu1 upon R. Here U is what? बताओ, object distance. What is V? Image distance. And R is what? What is R? We learned in class 10. Radius of curvature. Okay. See, this is the formula. Very important formula. Mu2 by V minus mu1 by U is equal to mu2 minus mu1 upon R. Okay. So, अब देखो यहां एक क्वेश्चन है, जो मैंने क्वेश्चन लिया है बीएम शर्मा से. बीएम शर्मा पे ये क्वेश्चन है और सो मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, पता है ना, सेंगेज तो डेफिनेटली पढ़नी है क्योंकि जेईई एग्जाम, राइट? तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो. क्वेश्चन है यहां पे, देखो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं. क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत लॉजिकल है. सी, क्वेश्चन में क्या गिवन क्या है, देखो ये एक स्पेरिकल फ्लास्क है और फ्लास्क एम्प्टी है. ओके, और बाहर सराउंडिंग जो मीडियम है वो वाटर है. वाटर का क्या होती है? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3, राइट? सो रेज ऑफ लाइट व्हाट आर कमिंग पैरेलल हियर. ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, सी this is so you have to understand this thing, that the rays of light after refraction they become what? Diverging in nature. Obviously na, this is water and this is what? Air. Empty means not vacuum, right? Air. So obviously what? Light is what? Traveling from optically denser medium to optically rarer medium. Hence light is diverged here, है ना? Okay. ना एक काम करो, इसको बैकवर्ड में प्रोड्यूस कर दो. ये थोड़ा सा इंक ब्लैक कर देते हैं अभी, राइट? इसको दैट मीन्स इफ यू आर द ऑब्जर्वर ना इनसाइड द फ्लास्क, यू विल फील दैट इवेंचुअली इमेज इज हियर. ओके, तो फ्रॉम पोल दिस इज माय व्हाट? इमेज डिस्टेंस, राइट? एंड फ्रॉम पोल दिस इज व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर. And obviously all the rays of light are parallel. हम लोगों ने सीखे थे क्लास 10 में, बताओ. When rays of light are parallel, that means U is at infinity. मतलब object is at infinity, है ना? तो सॉल्व कैसे करें? अच्छा, और देखो यहाँ गिवन है, ये 4/3 पता है हम लोगों को ना, और ये what is it? और डायमीटर 15 सेंटीमीटर है, राइट? चलो तो सॉल्व करते हैं इसको. So mu2 by V minus mu1 upon U is equal to mu2 minus mu1 divided by R. Okay, तो हम लोगों को क्या निकालनी है? V. तो mu2 upon V. What is mu1 upon what? U. U is definitely infinity. Okay, mu2 minus mu1 by R. Okay, अब understand. mu2 is what? क्या था?
द ऑब्जर्वर इज इन दिस मीडियम mu2, है ना? तो व्हाट इज mu2? 1, because the absolute refractive index of air or vacuum is what? 1. So this is 1. Now what is mu1? The surrounding the refractive index of the surrounding medium, that is what? Water. I mean 4/3, है ना? और फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था? आई थिंक 15 cm था ना? यस 15 cm था. तो we'll choose what here? plus 15 centimeter because this is sign convention. सर ये कहां से आया? ओके मैं बता रहा हूं, ये जो पॉजिटिव वैल्यू क्यों ली, हम बताओ, ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ना, इसके पीछे रीजन क्या है? हम लोगों ने क्लास 10 में किए थे ना साइन कन्वेंशन. देखो यहां पे ध्यान दो, दिखा रहे हैं इसको एक बार. सी all the distances should be measured from pole. Yes or no? Now from pole, center of curvature, this is radius. Now from pole, this is what? This is what? Image distance v, and obviously u is what here? Infinity, right? Okay. Now see, if we want to measure the radius of curvature, you have to travel in the direction of rays of light. Hence r is positive. If you measure any distance that is opposite to ray of light, that should be chosen negative, right? Hence, so mu2 by v minus mu1 upon u is equal to what? mu2 minus mu1 upon r. Okay, हम लोग को v निकालनी है, तो mu2 क्या है? 1. b you have to find out mu1 4/3, u infinity. Again what is mu2? 1 minus 4/3, और r is what? अब डायमीटर 15 cm था, तो फिर व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? 15/2, है ना? सिंपल चीज है, इसमें कोई क्या है इसमें? तो फ्रॉम हियर 1/v माइनस 4/3, ये 0 होगा ना, समथिंग बाय इंफिनिटी व्हाट? 0. और यहां से 1 minus 3/4, तो मतलब -1/3 एंड 15/2. यहां से v निकाल लो, -22.5 सेंटीमीटर. अब सर यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ? ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव दैट मीन्स व्हाट? द इमेज इज फॉर्म्ड जस्ट व्हाट? ऑपोजिट टू द rays of the direction of the rays of light. Okay, that means the image is created at the same side where the object is placed, right? And obviously this is a virtual image. तो है ना इजी, कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, थोड़ा लॉजिकल है बट इजी था, राइट? सो ओके, वर्चुअल इमेज क्यों? व्हाई इट इज वर्चुअल इमेज? बताओ. बिकॉज सी b is what then? 22.5 centimeter, right? Now I have said what? Virtual. Why virtual? Because you are here, right? It will be seemingly like that the image is here, na? Eventually what? It will be felt to you that the image is formed exactly this position, na? Hence it is virtual, right? So क्या था? एकदम easy questions था और बहुत important भी है for your JEE exam के लिए.